Young lovers in India who felt doomed by the official fiat to hug a cow on Valentine's Day instead of going out with their partners were relieved by the quick reversal of the order. The rowing back did not, of course, imply that the original idea stood undermined. It's just that it wouldn't be expedient when the government was bracing to host the all-important and habitually curious G20 heads for it to showcase an Indian tool of social control. It would be counterproductive if, instead of transmitting exalted ancient traditions to an errant new generation, the government found itself explaining to the invited heads the range of boons the cow brings to India. Consider another possibility. What if the Indian fiat of cow hug was unwittingly fulfilling the purpose claimed by Valentine's Day, of bringing young hearts together? An engaging story about Valentine's Day is complex and, in fact, distant from those posited by both its opponents and supporters. In Egyptian mythology, in which the cow was worshipped as the goddess Hathor, protection was given to young lovers who sought her blessings. At the same time, the accepted story about the man called Valentine shows him as one among many Christians martyred by Roman kings, in his case in 270 AD on February 14, at the hands of Emperor Claudius, among the cruelest in the lineage. The Christian priest was arrested, and while in custody, helped his jailer overcome an intractable crisis. He became the jailer's friend, who introduced his young daughter to the special prisoner. The priest's letter on the day of his execution to the girl was, "From your Valentine," or so the story goes. The preacher had shown several virtues, which fetched him the order of sainthood, hence Street Valentine. It does seem odd that of the 365 days in a year, young hearts should flutter only on one assigned day. For many reasons, the story could be deemed unworthy of being associated with the pining of young hearts today. Of course, there's a commercial interest in shoring up the sentimental story. However, an absorbing legend associated with the Christian priest brings him closer to the idea of young love in an impishly devious way. It seems that the cruelties of Claudius had made him totally unpopular with his own people. He requisitioned a strong new army to inflict more pain all around, but found it difficult to enlist enough able-bodied men. Told that the young Romans were more attracted to the idea of settling down with a family instead of joining Claudius's army, the emperor forbade future marriages and clamped down on young lovers, a method that seems akin to the anti-Romeo vigilante squads once let loose by the celibate chief minister of Uttar Pradesh. Valentine was very pleased with the young men's refusal to join Claudius's army, and he gave them all manner of help to meet and romance secretly. There is, of course, no way to ascertain the veracity of this lovely, subversive story. Also, it does seem odd that of the 365 days in a year, young hearts should flutter only on one assigned day to share flowers, send cards, and indulge in assorted revelries. Return to Hathor, the cow goddess, who represented what ancient Egyptians saw lovable in the female identity. In some ways she carried in herself qualities associated with Indian deities in different avatars in the country and beyond. Hathor represented fertility and motherhood, but also love, joy, music, the dance and all that was beautiful, says one assessment of the legend. There's a vast difference, though, between the way the current crop of right-wing nationalists propagate cow worship and its worship in other cultures, of which there are legion. Hindutva's militant assertion that the cow was worshipped though its flesh was not eaten in ancient India, has been vehemently challenged by eminent historians, usually with textual and related evidence. In Egypt's case, given that its people also were an agricultural lot, the cow was important for the milk it provided. But its meat, blood, horns and skin were also regarded as a boon with tradable value. The Egyptians thus interpreted it as a nurturing power, which Hathor provided for her people. Historians and archaeologists have estimated that there were more girls named after Hathor than girls with any other name. Priests presiding over her worship could be both women and men. Contrariness is not uncommon in deity worship anywhere. Perhaps because of her association with the evening, the cow goddess was also associated with death, and she is often found on the walls of tombs, welcoming the newly dead into the pleasant afterlife with food and drink. India's Durga is often worshipped in her avatar as the goddess Kali, bearing a red tongue,
depicting the blood she drank from the invincible demon Raktabij. Egyptian mythology has Hathor in a similar blood-curdling form. When men on earth plotted against the sun god Ra, who Hathor was variously mother and daughter to, she was enraged. Like a protective mother figure, Hathor set out to obliterate all those who opposed Ra, the king of the gods. The slaughter was so great that the higher gods intervened to stall the destruction of the human race. They flooded the Nile with red-colored beer, resembling blood, which Hathor drank up greedily. She soon became intoxicated and passed out, ending the slaughter. On the flip side, the invocation of Hathor was popular among those in search of love. This aspect of her is said to have prompted the Greeks to see in Hathor their avatar of Aphrodite. Cattle worship was common in practically every agrarian culture, China included. It was the Spanish gold diggers that brought the cow to the Americas from Europe. Thus, the Mayan ceremony saw the ritual slaughter of deer and leopards, which they worshipped and ate. Some of them practiced cannibalism too, but never ever lynched anyone, whether for loving or for eating what was deemed forbidden. The writer is Dawn's correspondent in Delhi. Published in Dawn, February 14, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. भारत में नौजवान मोहब्बत करने वाले जो वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने साथियों के साथ बाहर जाने के बजाय गाय को गिले लगाने के सरकारी हुक्म से मायूस महसूस करते थे, उन्हें इस हुक्म की फौरी वापसी से राहत मिली। पीछे हटने का मतलब ये नहीं था कि असल ख्याल कमजोर पड़ गया था। बात सिर्फ इतनी है कि जब हुकूमत G20 के तमाम अहम और रिवायती तौर पर मुतजस्सिस सरबराहों की मेज़बानी करने की तैयारी कर रही है, तो ये मुनासिब नहीं होगा ताकि समाजी कंट्रोल का एक हिंदुस्तानी आला दिखाया जा सके। इसके बरक्स अगर हुकूमत नई नस्ल को कदीम रवायात मुंतकिल करने के बजाय मधु सरबराहों को ये समझाती रहे कि गाय हिंदुस्तान के लिए कितनी नेमतें लाती है। एक और इम्कान पर गौर करें, क्या होगा अगर गाय को गिले लगाने का हिंदुस्तानी नारा नादानिस्ता तौर पर वैलेंटाइन डे के जरिया नौजवान दिलों को इकट्ठा करने के मकसद को पूरा कर रहा था। वैलेंटाइन डे के बारे में एक दिलचस्प कहानी पेचीदा है और हकीकत में इसके मुखालिफिन और हामियों दोनों की तरफ से पेश करदा कहानियों से बहुत दूर है। मिस्री असातीर में, जिसमें गाय को देवी हथवर के तौर पर पूजा जाता था, नौजवान मोहब्बत करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जिन्होंने इसकी बरकत तलब की थी। इसी वक्त वैलेंटाइन नामी शख्स के बारे में तस्लीम शुदा कहानी में इसे रोमन बादशाहों के हाथों शहीद होने वाले बहुत से ईसाइयों में से एक के तौर पर दिखाया गया है। इसके मामले में 14 फरवरी को शहंशाह क्लाड्स के हाथों नस्ब में सबसे जालिम ओहे में से एक था। मसीही पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत के दौरान उसने अपने जेलर को एक नाकाबिल हल बहरान पर काबू पाने में मदद की। वो जेलर का दोस्त बन गया जिसने अपनी नौजवान बेटी को खुसूसी कैदी से मुतारफ कराया। फांसी के दिन पादरी का लड़की को लिखा गया खत अब के वैलेंटाइन की तरफ से था। कहानी इसी तरह है। मुबल्लिग ने बहुत सी खूबियों का मुजाहिरा किया था, जिसकी वजह से इसे सेनेट वैलेंटाइन का दर्जा मिला। ये अजीब लगता है कि एक साल के 365 दिनों में से नौजवान दिल सिर्फ एक मुकर्ररा दिन पर फड़कते हैं। बहुत सी वजूहात की बना पर इस कहानी को आज के नौजवान दिलों के साथ मुंसलिक होने के काबिल नहीं समझा जा सकता है। यकीनन जज्बाती कहानी को आगे बढ़ाने में एक तिजारती दिलचस्पी है, ताहम मसीही पादरी से वाबस्ता एक दिलचस्प अफसाना उसे नौजवान मोहब्बत के तसव्वुर के करीब लाता है। ऐसा लगता है कि क्लाड्स के मजालिम ने इसे अपने ही लोगों में मुकम्मल तौर पर गैर मकबूल बना दिया था। इसने चारों तरफ मजीद तकलीफ पहुंचाने के लिए एक मजबूत नई फौज तलब की, लेकिन काफी काबिल अफराद को भर्ती करना मुश्किल था। बताया गया है कि नौजवान रूमी क्लाड्स की फौज में शामिल होने के बजाय एक खानदान के साथ बसने के ख्याल की तरफ ज्यादा राग़िब हुए थे। शहंशाह ने मुस्तकबिल की शादियों से मना किया और नौजवान मोहब्बत करने वालों पर पाबंदी आयद कर दी, एक ऐसा तरीका जो उत्तर प्रदेश के बरहमचारी वजीर आला की तरफ से छोड़े गए एंटी रोमियो और मुहाफिज दस्तों की तरह लगता है। वैलेंटाइन क्लाड्स की फौज में शामिल होने से नौजवानों के इनकार पर बहुत खुश था और उसने उन्हें खुफिया तौर पर मिलने और रोमांस करने के लिए हर तरह की मदद फराहम की।
यकीनन इस खूबसूरत तकरीबी कहानी की सदाकत का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा ये भी अजीब लगता है कि साल के 365 दिनों में से नौजवान दिल सिर्फ एक मुकर्ररा दिन फूल बांटने, कार्ड भेजने और मुख्तलिफ खुशियों में मशगूल होने के लिए झूमते हैं। गाय की देवी हथवर की तरफ लूटें, जिसने कदीम मिस्रियों की नुमाइंदगी की थी, जो औरत की शनाख्त में मोहब्बत के काबिल थी। कुछ तरीकों से उन्होंने मुल्क और इससे बाहर मुख्तलिफ उतारों में हिंदुस्तानी देवताओं से वाबस्ता खुसूसियात को अपने अंदर ले जाया। इस लेजेंड के एक जायजे में कहा गया है कि हथवर ने जरखेजी और मां बनने के साथ साथ मोहब्बत, खुशी, मौसीकी, रक्स और वो सब कुछ भी पेश किया जो खूबसूरत था की नुमाइंदगी की। ताहम दाएं बाजू के कौम परस्तों की मौजूदा फसल जिस तरह गाय की पूजा की तशहीर करती है और दूसरी सकाफतों में उसकी पूजा करती है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुत्व के अस्करियत पसंदों के इस दावे को कि कदीम हिंदुस्तान में गाय की पूजा की जाती थी हालांकि इसका गोश्त नहीं खाया जाता था, को मुमताज मौरखीन ने सख्त चैलेंज किया है, आमतौर पर मतनी और मुतालिका सबूतों के साथ। मिस्र के मामले में ये देखते हुए कि इसके लोग भी एक ज़री कौम थे, गाय इसके फराहम करदा दूध के लिए अहम थी, लेकिन इसका गोश्त, खून, सींग और जल्द भी काबिल तिजारत कीमत के साथ एक नेमत के तौर पर समझा जाता था। इस तरह मिस्रियों ने इसे एक परवरिश की ताकत के तौर पर ताबीर किया जो हैथर ने अपने लोगों के लिए फराहम की थी। तारीख दानों और आसार कदीमा के माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि किसी भी दूसरे नाम की लड़कियों के मुकाबले में हथवर के नाम से ज्यादा लड़कियां थीं। इसकी पूजा की सदारत करने वाले पुजारी औरत और मर्द दोनों हो सकते हैं। कहीं भी देवता की पूजा में तजाद गैर मामूली नहीं है। शायद शाम के साथ इसके ताल्लुक की वजह से गाय की देवी को मौत से भी जोड़ा गया था और वो अक्सर कब्रों की दीवारों पर पाया जाता है, जो नए मरने वालों को खाने और पीने के साथ खुशगवार बाद की जिंदगी में खुश आमदीद कहता है। हिंदुस्तान की दुर्गा को अक्सर उनके अवतार में देवी काली के तौर पर पूजा जाता है, जिसकी सुर्ख ज़बान है, जिसमें इस खून की अक्कासी की जाती है जो उसने नाकाबिल तस्खीर शैतान रुकता बीच से पिया था। मिस्री असातीर में हथवर को भी इसी तरह की खून आलूद शक्ल में पेश किया गया है। जब जमीन के लोगों ने सूरज देवतारा के खिलाफ साजिश की, जिसके लिए हैथर मुख्तलिफ माँ और बेटी थे, तो वो गुस्से में आ गई। एक हिफाजती माँ की तरह हथवर ने इन तमाम लोगों को खत्म करने का फैसला किया जिन्होंने देवताओं के बादशाह रा की मुखालफत की थी। कत्ल और गारत इतनी बड़ी थी कि आला देवताओं ने नस्ल इंसानी की तबाही को रोकने के लिए मुदाखलत की। उन्होंने दरियाए नील को सुर्ख रंग की बियर से भर दिया, जो खून से मलती जलती थी, जिसे हथवर ने लालच में पिया था। वो जल्द ही नशे में धत हो गई और कत्ल और गारत का खात्मा करते हुए बाहर निकल गई। दूसरी तरफ मोहब्बत की तलाश में रहने वालों में हथवर की पुकार मकबूल थी। कहा जाता है कि इसके इस पहलू ने यूनानियों को हथवर में अफरूदेती के अपने अवतार को देखने की तरगीब दी। चीन समेत तकरीबन हर ज़री सकाफत में मवेशियों की पूजा आम थी। ये हस्पानवी सोने की खुदाई करने वाले थे जो गाय को यूरोप से अमेरिका ले आए। इस तरह माया की तकरीब में हिरन और चीते को ज़बह करने की रस्म देखी गई, जिनकी वो पूजा करते और खाते थे। इनमें से कुछ लोग आदमखोरी का भी रिवाज रखते थे, लेकिन कभी किसी को पेट पेट कर कत्ल नहीं किया, चाहे वो मोहब्बत करने की वजह से हो या हराम चीज खाने की वजह से। मजमून निगार दहली मैदान के नामा निगार हैं। अखज़ शुदा बतारीख 14 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.